मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रामाराव। सो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, रामाराव कैसा कैरेक्टर था। तो बेटा, रामाराव is the main character of the story Out of Business, written by R.K. Narayan, जो अभी आपने पढ़ा. He is a Malgudi agent in a gramophone company. He is an elderly man having his family comprising of his wife and children. He appears to be a satisfied person doing his a well-to-do family, owning a bungalow and also planning to buy a car. Ramarao is a kind of man who believes in a single source of income, thus finds himself restricted and controlled by the external circumstances. But a simple sigh. He is out of the job and spends his little money saved at home, but soon finds himself on the road. तो ये आपको पता है स्टोरी में कैसे ये सब कुछ होता है. He leaves no stone unturned to get re-employed in any other company, but receives rejection all the time. So in a state of desperation, he focuses on solving the crossword puzzles to earn money, but fails continuously. He ignores his family under the stress of earning some money to keep things going, but ends up in desperation. Every time he hopes to win the contest, he fails and feels doped, which leads to depression and disaster. In the fit of stress and disappointment, Rama Rao plans to commit suicide to avoid the pain and sorrow that he experiences at his home. The delay in the train timing provides him a chance to think over his family and children. He cancels the idea of suicide and joins back his family and finds new source of income and lives happily. Ramarao gets entangled through his actions and from the state of satisfaction alternates to desperation and disappointment. His unreasonable responses and immature decisions put his whole family into a disastrous situation. Thus, in the story, we witness how Ramarao alternates between hope and despair. His family seems happy and contented, but the sudden turn of events changes the equation. It blanks the mind of Ramarao, and in the midst of turbulence, he nearly surrenders to the challenge, but is narrowly saved by the little favor of luck. Okay, so that was something about the character. Now let's go to the most important takeaway point from this story. What is the takeaway point? So first of all, stories are read and comprehended. पढ़ते क्यों है और समझते क्यों है बच्चे? By students in order to acquire life skills to live successfully. जिंदगी कामयाबी के साथ जीने के लिए हमें life skills इन स्टोरी से मिलते हैं. तो कौन से life skills हमें मिले हैं इस स्टोरी से, Out of Business से? This story warns us not to take shortcuts in life, as they may cut our life short, as Ramarao wants to earn money through this method and ends up to commit suicide. शॉर्टकट्स रामाराव करने की कोशिश कर रहा है कि वो पजल से जीतूं, कोई काम किए बगैर सडन मनी आ जाएगा, लेकिन नहीं पैसा आता है तो वो खुदकुशी करने पे मजबूर होता है. तो शॉर्टकट्स लाइफ में लेने नहीं चाहिए. दिस इज फर्स्ट टेक अवे पॉइंट. सेकंड वन, वी शुड ऑलवेज कीप आवर कूल एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद कंट्रोल एंड मैच्योरिटी. तो हमें दिमाग को ठंडा रख के हालात का सामना करना चाहिए, आराम से कंट्रोल अपने इमोशंस पे रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझ सूझबूझ के साथ फैसले जिंदगी के लेने चाहिए ताकि हम कामयाब हो जाएं. We need to have different means of income so that if one means fails, we can more rely on another option without putting the whole family in precarious situations. तो as हमारे पेरेंट्स, हमें उनको भी समझाना चाहिए कि हमें घर में जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, इस के साथ भी काम करना चाहिए. कोई हमारा जो है जो वोकेशनल काम आता हो उस पर भी फोकस करना चाहिए. हम जॉब करते हो उसको भी करना चाहिए. तो ट्राई करना चाहिए कि हमारे घर में जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बहुत सारे तरीके से आ जाए, ताकि गॉड फॉरबिड अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए हम किसी और चीज पर शिफ्ट हो जाएं, घर चलता रहे, हालात खराब न हो जाए. तो ये है टेक अवे पॉइंट जो हमने इस स्टोरी से लिया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट we can learn this powerful lesson जो हमें मिलता है वो है don't put, जो मैंने तकरीबन इससे पहले का जो है उसी के साथ मिलता जुलता प्रिसाइज किया हुआ ये एक टेक अवे पॉइंट है. आप सब जुबान याद रखें. Don't put all your eggs in one basket.
यानी which means one should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything, जैसे इस स्टोरी में होता है। तो ये मैंने सब्सटेंशिएट करके ये पॉइंट आपको दे दिया है, राइट। सो here are few questions that I hope you to do, right? तो क्या है वो? तो पहला पॉइंट है, व्हाट मेक्स अस बिलीव दैट रामाराव लिव्स अ टर्बुलेंट लाइफ। बहुत ही तूफानों से भरी हुई जिंदगी रामाराव गुजारते, तो कैसे हमें पता चलता है? सारी स्टोरी टेल्स अस दिस। व्हाट डज होप, डोप एंड रोप सजेस्ट इन द स्टोरी? मैंने अभी आपको बताया, पहले होप, उसके बाद डोप, उसके बाद रोप, ये सारी सिचुएशन से गुजरता है रामाराव। तो ये हमें क्या, व्हाट डज दे सजेस्ट, तो क्या रामाराव के कैरेक्टर के बारे में, ओवरऑल स्टोरी के बारे में ये तीनों पॉइंट्स, तीनों वर्ब्स हमें समझाते हैं। डिस्क्राइब फ्यू पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ रामाराव। तो पूरी स्टोरी में आपको इनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, तो आप कुछ पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट डाउन एंड नोट देम। Which life lessons did you learn through the story? तो अभी लास्ट में मैंने लाइफ लेसन्स की बात की, तो कौन कौन से लाइफ स्किल्स, लाइफ लेसन जिंदगी गुजारने के कामयाब तरीके आपने स्टोरी से सीखे? तो टेल अस, राइट दैट डाउन। How will you describe the unexpected ending of this story? तो how will you describe the unexpected ending of the story जो लास्ट में होती है, तो आप उसको कैसे यहाँ पे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे?